on to the next part of today's agenda. As we do every year, this year as well, we have a very interesting panel discussion lined up for you. Since this year's ASR discusses various different domains pertaining to youth, we only thought it fit to bring diverse stakeholders together to do a charcha on how best we can support India's youth to achieve their full potential. With this, I would now like to invite our panelists on stage. So I don't think I need to say much to kick off anything. I need to just tickle. So let me tickle and say, who wants to go first and give 2 minutes of comments about the report that you've seen or what you've heard from Manish? Whoever wants to start. Ladies first, Geeta? By default. Yeah, no, it's difficult to comment on anything that Manish said because I'm also trying to process it. I saw myself nodding my head quite a few times. So I do think India, I mean, we don't have a, I completely agree, we don't have a jobs problem, we have a wage and a productivity issue. So, and to solve for that, yes, I mean, the thoughts I had were, I mean, we are still, as a society and a system, bogged down by degrees and certificates rather than actual skills. And yeah, I mean, at the cost of citing a movie, I recently saw 12th Fail. And, you know, I mean, just the comment that ये बच्चों को cheating करवा के 12th pass करा देंगे और वो कहीं पे peon बन जाएंगे. I mean, if, you know, like, I just think that was very telling of our system. So I think we can have a longer discussion, but I do feel our systems, whether they are schools or colleges, are not yet preparing the youth for, you know, agency, for choices. I do think role models need to increase. And maybe the one thing I'll pick up later is the whole career counseling piece, or even giving choices and options and awareness to the students. I was hoping maybe the report would have talked a little bit about how many students are aware of what they want to do, what are the roadmaps, but anyway, we can talk later about that. Excellent. Amit ji, aap jana chahte hain next? Thank you, Madhav. It's a good thing Geeta talked about what is not in the report and what she would have liked to do. Maybe you can follow up on that? Well, I'm still absorbing the report and Manish, who sort of peppers you with his thoughts at breakneck speed. I mean, it's like being stood in front of a machine gun going pat, 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 pat. And you've got to try and sort of, you know, absorb all of it. But a lot of food for thought there. And like you, I intend to watch that video again. I think whenever I think about education, I sort of vary between the agony and the ecstasy. The agony is usually on most days when I despair of what is happening in schools and what is happening with young people who deserve so much more than what our education system is giving them. The ecstasy is when I see things like today's videos, and I look at the report that Pratham has produced, and I must congratulate Pratham and ASR Center, because the first ASR report kick-started a conversation about enrollment in schools. It was the first attempt to highlight what was happening in the education system, और वो 2% education cess जो हम सब दे रहे थे, उसका क्या हो रहा था, कहाँ जा रहा था. Today's report is similar. It is shifting the focus, and it's pushing us to think about what's happening to those children जो थोड़े बड़े हैं. छोटे बच्चों की तो हमने बहुत ही बात कर ली अब तक, प्राइमरी में क्या हो रहा है और सेकेंडरी अपर प्राइमरी में क्या हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी वाले बच्चे जो हैं वो कहाँ हैं. ये जो FLN पर इतना जोर दिया जा रहा है, FLN is benefiting children who are at a certain level today, लेकिन जो सिस्टम से निकल चुके हैं उनका क्या हो रहा है. And I like the phrase that Manish used, prepare, repair and upgrade. We seem to have missed the prepare bus, but this is an opportunity for us to, particularly given the widespread use of smartphones and the digital ability that young people seem to have, this is an opportunity for us to focus on the repair and upgrade part, so that we can actually take advantage of the wage premium that was discussed. So I'm going to stop here, but more to come. Pankaj, you want to take on? So I think first up,
तीन चीज़ें जो मुझे रिपोर्ट में बहुत इंटरेस्टिंग लगी, एंड आई फील दैट दीज आर एरियाज विच वी वर्क ऑन एज वेल. सो एक अराउंड 7 साल पहले असर के साथ एक रिसर्च में पार्टनर किया था. 7 साल पहले हमें क्लियर था कि कारण जो हैं जिनके कारण लड़कियां पीछे रहती हैं वो अलग हैं. The rates of dropout, the rates of transition, they seem to be very equal. And even about 6 years back, and this was in district of Hardoi and Sambalpur, so two very wildly different places in India. And I think that still seems to be an issue, and I think that was one thing that stood out for me. Second is that I think कहीं काफ़ी सारे पॉजिटिव में और यूफोरिया में हम ये बात शायद मिस नहीं कर दें कि लर्निंग अभी भी बहुत पुअर है. And I think that holds the key, you know, and I think it comes back to giving children the opportunity to catch up, that second chance, you know, to have one more go at learning and creating opportunities around that. And I thought that was one part in all the positive, you know, I was seeing a dark lining in that silver cloud. तीसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि the way we have not seen education, we've not seen the tools to educate. This young generation is reimagining it. You know, so if you don't have a great teacher, you may have access to a device. If you don't have a solution, you know, in terms of, you know, a recipe, you are able to access, you know, using technology. So I think जुगाड़ जो है पूरा for this young generation, it again then lends us to think a little bit about the gaps that we are leaving behind. I think ये तीन चीजें मेरे लिए immediately, you know, obvious थी और interesting थी. Okay, we can. I don't think you can see him from there, can you? ओके Oh, there. Okay, good. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सामने लीन करूँ. तो आई फर्स्ट आई एम जस्ट डिलाइटेड कि दिस ईयर सर फोकस इज ऑन 14 to 18. आई थिंक एक तरह से लाइक आई फील इट्स अ नेशनल शेम कि हम 2005 से जानते हैं दैट आवर लर्निंग आउटकम्स हैव बीन एज पुअर एज दे हैव बीन, एंड हमारे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी आउटकम्स इन 18 years हैव नॉट रियली मूव्ड even a few percentage points, right? So that's and I'm glad that as a country we are now focusing on it, that there is an FLN mission, speaking to a bunch of people जो उस पे काम कर रहे हैं, and I feel कि अब शायद like it feels like hey we understand what might it take to move that. I think in the secondary space and the at least the abstract level पे जो मुझे समझ में आता है, हमें पता भी नहीं है कि hey, what should young people be able to do, right? What capabilities, what skills, what knowledge, what mindset, कि अगर हम इन चीज़ों के लिए तैयार करें, इन चीज़ों में अगर बच्चे कामयाब हो जाएं तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि वो आगे जाके अच्छा कर पाएंगे. So what are those? Like what is the goalpost? What is the asar for youth? I feel is a big gap, right? कि I think वो जब when we get to a quantification and a goalpost for हाँ ये होना चाहिए और इसको हम पूरे देश में assess करते हैं कि हम कहाँ हैं, and then we can start the journey that ASAR started in 2005 for FLN and for primary. I feel like that's when we at least start this journey. I'm glad that we are tickling the problem right now and we are starting to explore hey what that challenge is. So that's the first. I think second piece that and Manish alluded to it a bit, which is I feel more than thinking of this as a individual challenge of the learner, to think of it as a cultural challenge of our workforce or of our population and society, right? That what is a good way to progress? So from shifting from finding either a stable government job, which between 2014 and 2022, 22 crore applicants apply on an average, वही 12th fail आपको दिखाता है कि हाँ 4 बार तो 4 attempt allowed है, 4 attempt तो लेंगे, तो 3 साल तक आप एक परीक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, right? वो 22 करोड़ बच्चे जिसको eventually 7 लाख नौकरियां मिलती हैं. So that aspiration shifting
फ्रॉम कि किसी तरह सरकारी नौकरी लग जाए और लाइफ सेट हो जाए टू मुझे काम करना है, मैं काम करके आगे बढ़ूंगा, राइट? दैट मेहनत करने की तैयारी, हम शायद परीक्षाओं में मेहनत करने की तैयारी सिखाते हैं, पर काम में मेहनत करने की तैयारी आई फील इज अ कल्चरल शिफ्ट, कि ये उम्मीद मतलब हम सबको क्या हमारे बच्चों से है मेहनत करने की उम्मीद. So that for me, like, hey, how do we shift this culturally from just an individual, that hey, what skills, what mindsets do they have, but also our expectations of them and with them and support for them to be able to do stuff. Yeah, and I think finally, if we have those two, and if we have probably an asset for youth, we can set goals and have expectations of the educational institutions. कि हमारे स्कूलों में क्या होना चाहिए, छठी से 12वीं में, like I feel it needs a serious relook, rethink, possibly a serious amount of reform. That हम अभी भी वही चीज़ें किए जा रहे हैं जो हम 25 साल पहले करते थे, with no measurement of how has this helped, right? No accountability and our learning systems not learning कि हाँ क्या ये पढ़ने से बच्चों का फायदा हो रहा है, right? और जब तक इस चीज़ की समझ नहीं आएगी और ये सिस्टम सीखने लगेगा कि हाँ ये किया तो 15 साल बाद या 10 साल बाद बच्चों का फायदा हुआ, बच्चों ने ये सब किया, they were able to do it, whether it's social, whether it's economic, that's starting to happen. So I feel like, hey, those are the three which stood top of mind for me. मैंने शुरू में गीता ने कहा कि ये नहीं था, ये अगर होता, अगर रिपोर्ट में तो अच्छा रहता. And you are now coming back to something similar कि एजुकेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए वगैरह. मैं थोड़ा दूसरा सोचता हूँ. एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ नहीं है और कुछ असर में भी कमी रह जाती है. चेहरे में देखते नहीं चाहता सामने बैठे हुए कि जो हमको पता है, मुझे बचपन में ऐसे बहुत लगता था, स्कूल में 2-3 बार ऐसे मुझे लगा कि ये टीचर कैसे जानती कि मैं क्या नहीं जानता हूँ. वो वही सवाल पूछते जिसका जवाब मुझे पता नहीं. मुझे ये नहीं पूछते कि तुमको क्या पता है. मुझे अगर आप पूछते कि कवर ड्राइव कैसे मारना है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप कुछ दूसरा ही पूछते हो जो मुझे पता नहीं है. ऐसे कैसे हो सकता है? See, we are asking questions where we think we can find answers. Okay, जो टूल्स हमारे पास है उसको लेके. अब इस बार बहुत कुछ अलग किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि we should be able to explore. इसमें एक बहुत बड़ा गैप है. We did not ask kids, what do you know about sex education? If 14 to 18-year-olds को अगर नहीं पूछोगे तो किसको पूछोगे? ना देश में कोई पूछता है, ना एजुकेशन सिस्टम में कोई पूछता है, ना घर में कोई पूछता है, और हम भी नहीं पूछते हैं. मुश्किल है पूछना, जवाब देना और भी मुश्किल होगा. बट दिस इज इजी. वी हैव टू डिवाइस वेज ऑफ एक्सप्लोरिंग द यूथ कि कैसे करते हैं आप लोग, क्या करते हो. क्योंकि इसमें हमने पूछा नहीं तुमने पोर्नोग्राफी देखा है क्या? इतना एक्सेस है, फ्री एक्सेस है, और सब लोग जानते हैं. यहाँ पे कितने लोग मानते हैं कि 50% बच्चों ने तो पोर्नोग्राफी देखी होगी, 14 to 18 वाले. कुछ लोग डर डर के हाथ ऊपर करने, अरे आपके बारे में नहीं पूछ रहे हैं. So this is very important for our health. ये डिस्कशन हो रहा था कुछ कि क्या करना जरूरी है वगैरह वगैरह. So there are questions that we have not asked and we should ask. ये बच्चों को पढ़ना आता है कि नहीं? सेकंड स्टैंडर्ड का पैराग्राफ अब मेरे ख्याल में पुराना हो गया. अगले साल 2 साल में हमको इसको बदलना चाहिए. Because I don't know what relevance it has when you can hear things when the machine is talking to you. तो वो आपको पढ़ना आना चाहिए. नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं आना चाहिए, नहीं तो मुझे जो दूध तो पड़ेंगे प्रथम के लोगों से ही. So ये इस पर थोड़ा सा अगर आपका डिस्कशन थोड़ा उस तरफ जाए, ये सारे जो इश्यूज हैं, जो यूथ के इश्यूज हैं, जिसको देखना चाहिए. इधर आप एक्सेस दे रहे हो, एक्सेस से लोग बच्चों को मिल रहा है. एजुकेशन के लिए काम करने वाले लोग इसको कैसा देखेंगे? Now who wants to take it? That's a very good question. That's a very good question. और जो सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं उनमें एक सवाल और भी है
इन बच्चों से कोई नहीं पूछ रहा है कि वो क्या चाहते हैं. Yeah. The system is providing a certain set of things because that's what the system is geared to do. और जैसे मेकिन ने अभी कहा 25 साल नहीं 70 साल से ऊपर हो गया है. 1965-66 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें जो इश्यूज लिस्ट किए गए थे कि एजुकेशन में ये प्रॉब्लम्स हैं, वो आज भी शिक्षा में वही प्रॉब्लम चली आ रही है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है. तो सिस्टम तो अपनी तरफ से वही कर रहा है जो शुरू से करता आया है. हम लोग भी as Asar or as people who work with young people, we ask certain questions in terms of what the system is providing or what they're getting or not getting. Nobody is stopping to ask the children what they want today, especially at a time when technology has completely changed the way in which they're interacting with the world. आज की डेट में उनके पास में ऐसी चीज़ों का एक्सेस है जो हम और आप सोच भी नहीं सकते थे जब हम उस उम्र के थे. They are no longer dependent on what is happening inside the school. I recently read a couple of PhD theses, and one of them did this research around young people, slightly older kids, not necessarily 14 to 16 or 14 to 18, but maybe 16 to 20. And one of the statements that one of the respondents made just stood out for me. School तो साहब certificate के लिए है, नौकरी के लिए नहीं. So school is not seen by these young people as something that is going to give them a livelihood. There is an example in one of those theses of a young man who has barely finished his class 12. He runs 2 YouTube channels. One YouTube channel he runs which is a monetized channel. It has something like 3 million followers. The other channel he runs which explains how things are done and explains some of the things perhaps that schools should have done when children are in school. He doesn't charge any money on that. He doesn't monetize that channel. Why? He says, मैं जब बड़ा हो रहा था मुझे सिखाने के लिए कोई नहीं था, तो और लोगों के पास में एक ऐसा चैनल होना चाहिए जहाँ ये जाके सीख सकें. तो यूथ का आज की डेट में सोचना बिल्कुल बदल गया है. उनका सोचने का ढंग बदल गया है. उनके पास एक्सेस, टिकटॉक तो बैन हो गया लेकिन टिकटॉक नहीं है तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है. ये सब, इन सब टूल्स को लेकर उनके स्किल्स बहुत बढ़ गए हैं. लेकिन हम और एजुकेशन सिस्टम उनसे ये नहीं पूछ रहा है कि बेटा तुम क्या चाहते हो, तुम किस प्रकार की नौकरी ढूंढते हो, तुम्हारे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है. हम वही 4 चीज़ों को, घिसी पिटी चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. Maybe I can just come in there. एक तो I wanted to react कि बच्चों को पढ़ना तो आना ही चाहिए. I think कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो भी मैथमेटिकल आपको ऑपरेशंस आते हैं. तो मतलब I think इन क्वेश्चंस में ऐड करना चाहिए, पर ये बेसिक क्वेश्चंस हमें हटाने नहीं चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है. I also think कि खुल के ताली बजा सकते हो आप. दूसरा आई थिंक काफ़ी, मतलब ठीक है पहले बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अब एटलीस्ट स्कूल जाते हैं. सो यू नो, एंड स्कूल में जो भी सीख रहे हैं एटलीस्ट एक साथ इकट्ठे होते हैं. मतलब ये एक प्रोग्रेस हुई है. मच मोर कैन बी डन, बट आई थिंक द रिड्यूस्ड जेंडर गैप, द इंक्रीज्ड एनरोलमेंट, द रिड्यूस्ड ड्रॉप आउट, थोड़ा इम्प्रूवमेंट पढ़ने में भी, मतलब आई थिंक अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा है. बट अमित, आपने बोला कि हम पूछ नहीं रहे हैं बच्चों से वो क्या करना चाहते हैं. तो असर में तो नहीं, पर एक और सर्वे हुआ था बाय आई थिंक आई ड्रीम करियर भारत एस्पिरेशन. उसमें यही पूछा गया था, यही एज ग्रुप था 14 to 18, एंड आई वुड से ओनली 10% ऑफ द चिल्ड्रन न्यू कि आगे क्या करना है और कैसे करना है. मतलब लेस, आई थिंक क्लास 12 में लेस देन 5% बच्चों को मालूम था कि मुझे आगे ये एग्ज़ाम देके ऐसे करना है. सो आई गो बैक टू सेइंग कि येस, स्कूल्स, सिस्टम्स, डिजिटल, पेरेंट्स, कम्युनिटी, सबको एक साथ ही आके मतलब वो रोल मॉडल्स बनाने पड़ेंगे और वो पाथवेज और वो एस्पिरेशन बनानी पड़ेगी. आज गूगल मैप में वी कैन पुट इन कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ये पाथवेज हैं, वो हमें दिखा देते हैं. आई थिंक वो हम बच्चों को अभी नहीं दे पा रहे हैं, एंड इट मे नॉट बी दैट डिफ़िकल्ट. अगर आप पूरा उनको एस्पिरेशन मैप दिखा दो और कैसे पहुंचना है, एक वो गोल डायरेक्टेडनेस आ जाएगी बच्चों में, एजेंसी आ जाएगी. आई थिंक
back to the point कि that's where हाँ, the the career learning to counselling learn, comes the back. career counseling come back. एक खुद अपने आप कंट्रोल लेना सीख लेंगे. मतलब आई थिंक नितिन का भी पॉइंट था कि बच्चों को क्या आना चाहिए आगे बढ़ने के लिए. ऑब्वियसली हर ट्रेड, हर जॉब, हर एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप जो भी कहें, अलग अलग चीज़ें आनी चाहिए. बट एक लर्निंग टू लर्न और एक एजेंसी एंड अपने पे कंट्रोल और अपनी डायरेक्शन, आई थिंक दोज आर इम्पोर्टेंट वंस. हाउ द सिस्टम एंड ऑल ऑफ the community can get to it is I guess the next question. Yeah, I think I resonate a lot with what both of you have just said. But I do want to hence now bring in a slightly different flavor कि हमारी शिक्षा प्रणाली, like the system that exists, right, is designed, and Karthik calls it beautifully, the selection system. कि भाई मतलब क्लास में कौन टॉप कर रहा है. हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वेयर द एग्जाम इंडस्ट्री और द एग्जाम प्रेप इंडस्ट्री इज लार्जर देन द एजुकेशन इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट. एंड वही वो जो कहानियाँ हैं कोटा की या प्रेपरेशंस की, दोज आर रियल स्टोरीज. नाउ हाउ लॉन्ग विल वी बी ओके विद आवर किड्स फीलिंग लाइक फेलियर्स continuously at the largest of scale? And yes, failure is important, it helps build grit, but when you are looking at selection percentages of 1 in 3,000, right, you know that, hey, for majority, it's not necessarily something that's going to work out. What that leads to in terms of just self-belief and mental health, and for some of the people of my age, my generation, this might seem like, oh, ये सब बकवास है, right? But I think अगर हम बार बार किसी को बोलते रहेंगे कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम किसी काबिल नहीं हो, right? Instead of being able to figure out and create pathways, right? कि एक वो पतली सी पगडंडी की जगह, if there are thousands of pathways, जहाँ कम से कम कुछ लाइट हाउसेस हैं, रोल मॉडल्स हैं, जिनसे रास्ता दिखने लगे कि अच्छा ये भी हो सकता है, कि जैसे यूट्यूब चैनल बनाए जा सकते हैं. सो इन आवर वर्क वी जस्ट एनकरेज किड्स कि तुम क्या करना चाहते हो, राइट? कुछ करो, ट्राई एंड डू एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर विद 2,000 रुपए. एंड द काइंड ऑफ थिंग्स स्टूडेंट्स डू इज स्टफ दैट ब्लोज आवर माइंड, राइट? कि देयर आर 2 girls in rural Andhra Pradesh who created a snake detector, right? Now that's not a problem that you and I will think of, but in rural Andhra Pradesh, that is a problem. And they will solve problems that are relevant to them. That actually, if I think about it, in rural parts of the country, stepping out in the dark and knowing that, hey, my infrared snake detector is not beeping, will make you feel a lot safer कि हाँ मैं जा सकता हूँ बाहर. तो ये चीज़ें मतलब जब बच्चे करने लगे, और ये 9th grade की 2 बालिकाएं हैं, and they are able to do this, I feel for us to open up our schooling system to not help them feel like failures on set tests that we have decided कि हाँ ये आना चाहिए तुमको, बल्कि we are able to make the system like अच्छा तुम क्या कर सकते हो, right? And what support can we provide? Can we be the wing? Can we be the wind under their wings, right? और उनको उड़ना सिखाने की कोशिश करें, instead of trying to say कि अच्छा तुम्हें ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तुम रहने दो, तुम लाइन में पीछे जाओ, right? So how do we change the culture of education? कि शिक्षा में हम ये कैसे करने लगे ताकि this is what becomes what all of us, because the number of people who are trying to make these kids successful is very large, लेकिन हम eventually वो 2% जो top colleges, top universities से निकलते हैं, उनकी सक्सेस की ग्लोरी में वी ऑल्सो बास्क इन, वे लाइक देखो 1 करोड़ का पैकेज लग गया है, और बहुत खुश हो जाते हैं, विच इज़ ग्रेट. लेकिन वो जो करोड़ों जिनके पैकेज नहीं लग रहे हैं और जो पैकेज नहीं लग सकते हैं, उनके बारे में सोच के डिज़ाइन करना कि hey, how do we create systems that actually make this happen, I feel is an important path for us to take. Thank you. शायद इस पैनल पे मैं उन कम लोगों में से एक हूँ जिनको बहुत दिनों तक क्लियर नहीं था वो क्या करने वाले हैं. तो आई एम नॉट अ बिग वन फॉर पाथवेज, बट आई एम अ बिग वन फॉर बूफेज कि मुझे भी नहीं लगा. तो मुझे लगता है कि बच्चों को नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने का
क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का, कल्टीवेट करने का, और कुछ डाउन टाइम, आइडल टाइम, to space out, to think of things that eventually be creative. I think ये हमारा system अभी कर नहीं पा रहा. And I think that's one key issue that we face. The second one, which is sort of stealing from many of my Kabul panelists, is that आप चाह रहे हैं कि स्कूल आपकी सारी समस्याएं हल कर दे. वो पढ़ा भी दे, लिखा भी दे, आपको अच्छी कल्चर सिखा दे, वैल्यूज सिखा दे. I think we're expecting too much from the school. And what we need to really now go to the agency of the child. And in this case, it's not a child, it's a young adult. And every time when people ask us, in my organization, that why has the research or the work shown so much of sort of positive outcomes, it comes from that hunger this young adolescent has. And tapping that hunger, and clearly giving direction, as you said, giving those opportunities. तीसरी चीज मुझे चिंताजनक लगती है, and I was very impressed with Manish and all the things that he said, but I don't think you can always think of a young child, or at least मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ, और बहुत सारे young लोग हैं जो अपने बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं कि we are an agent of productivity, we are an agent of economic output. Artists ऐसा नहीं सोचते हैं, performers ऐसा नहीं सोचते हैं. So there is a cultural value, there are so many aspects of education that we are missing out. But मजेदार बात ये है कि शायद school is not the answer, but the system is. And I think this is where I go back to teachers, and I go back to the power of teachers and what they are able to do. And I think that is for me a more nuanced view of this. Clearly learning नहीं छोड़ना, मैंने भी यही बोला था, और रुक्मणी मुझे तो मार भी सकती हैं, तो बिल्कुल लर्निंग नहीं छोड़ना, पर दूसरे मुद्दों पे सोचना बहुत जरूरी है. I think those are very important points that you've raised. But I can't disagree with Manish, because while the purpose of education is to create a higher human being, it's not about productivity only, it's not only about the economics of it, it's not only about helping a country to grow economically, it is about creating a higher human being. The fact is that our systems are not even meeting that first initial step of just creating that productivity. The interesting thing is that these are not problems that are confined only to India. I work for a company that is Australian in origin. And in Australia, one of the assessments that we offer is actually an assessment for employers who use it on fresh graduates or people who are joining the company to ensure whether they have the basic reading, writing and numeracy skills that are required for that job. So you can be, as you may be aware, Australia has a very strong history of skill development. Right? They have a lot of the trades in which skills are very highly developed. But you can be a very skilled plumber, carpenter, electrician, and yet at the same time be unaware of how you keep stock, or raise an invoice, or read a bill of quantities. And this is an assessment that is designed to help employers identify those people who need such support, which is then provided in the premises of the employer. So ये जो समस्या हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो समस्या सिर्फ भारत देश में नहीं है, ये समस्या और जगह भी है. And I think this is an ongoing thing that we battle with where education systems are concerned. How do you prioritize at least the basic skills that students should have before they go out into the world of work? And when we talk about the world of work is changing. It's no longer what it used to be when I was a student. It is not what it is when my father was a student. It is a completely different world there today. Barriers to entry in most industries are actually increasing. They're not, despite what Manish said about lowering hiring standards. The fact is that if you look at the need for a knowledge of, say, automation, or using some kind of computer, or
some skill of that nature, those requirements are increasing. So how do we prepare young people to be able to deal with those demands in a way that makes them successful? And I think those are the questions that the system needs to be asking and we need to be asking, which we are not yet. You look like you want to say something, Geeta. Do you? नहीं, मुझे एक डायमेंशन ऐड करना था, जो लर्निंग की बात करी कि this has to be learned, that is good. Learning, I firmly believe, is not something that only happens in school, and a lot of learning happens outside the school. First, so ये अगर सच है, and now with so many tools to learn outside the school system, what is the relevance of school? आप मैं जानता हूँ कि आप कह रहे हो कि स्कूल में बेसिक होना चाहिए वगैरह, but at a certain age you have to learn your basics. But whether you learn them from the school or your own school has to be figured out. Is there a social answer to this? School was a social answer, an economic answer as well. But is that a valid answer now? I mean, वो श्वेता सामने बैठी है, वो she is going to start ringing the bell. हाँ, learning मेरा ठीक करेगी वो. But this is where the opportunity is, because 92% children, students have access to a smartphone of some sort or are able to use a smartphone of some sort. That's where the opportunity is. How do we make sure that those who miss the bus on those basic skills are now given that opportunity to make up on it? So, from prepare, we're now at repair. I think 2 or 3 things. One, जब मैं एजुकेशन सेक्टर में घुस रहा था, 2017 की बात है, we talked 10th के बाद the pass rate in Karnataka was at about 45%. And we are thinking कि अच्छा जो 55% 10th clear नहीं करते हैं, क्या हम उनके साथ काम करने की कोशिश कर सकते हैं? तो हम लोगों ने एक कम्युनिटी में जाके 10th की तैयारी में मदद करी और उसके बाद उन बच्चों के साथ टच में रहे. जब रिज़ल्ट आया और उसके बाद 11th के दाखिले हो गए और हमें पता चला कि as in 50% of the kids we were working with had failed the 10th exam. तो उनको ट्रेस करने की कोशिश की, मतलब 15-20 दिन नहीं मिले, उसके बाद फिर धीरे धीरे पता चला कि उन सब का 11वीं में दाखिला हो गया है. That there are private institutions who are happy to take 10th fail kids, take the fees from them, right? कि आओ पढ़ो, मतलब, और 12th के पहले, 12th के 6 महीने पहले उनको फिर तकादा करते हैं कि अच्छा अब तुम ये 10th का एग्जाम की सप्लीमेंट्री दे लो, क्योंकि इसके बिना तुम 12th नहीं दे पाओगे. उनकी 1.5 साल की फीस की कमाई गारंटीड है. It's a business model that works for the private educator. It's a solution that works for the parent, because these kids on the street are under a lot more stress and threat than when they are going to an institution for 6 hours. कि 6 घंटे कि बच्चा क्या कर रहा है, कॉलेज जा रहा है, is a very, very safe answer for the parent and a reasonable and socially acceptable answer. So I think, and you had talked about this on the essay that I asked to be put online, which is that our schools are daycare centers, right? Our places of learning are really daycare centers. I'm a good student, I must say. No, and I feel that there is possibility to make them more fun, like good daycare centers are. There's a possibility for us to enable those daycare centers to become things that understand the students and help those students do a lot more and give them a lot more freedom and independence than the structure that exists in imposing the kind of things that we do. So that I think is the one answer from a social point of view. Hey, what is the need or relevance of the schooling system? I do believe schools are important. मतलब whether वो community है, मतलब एक congregation of children is important. वो teacher सिखाए या digital सीखें, and वो एक basic level पे आके people can have their own ways of learning. I also feel until schools remain, I think it's very important कि जो Nitin raised the point of failure. Our schooling system should not become the point of failure. मतलब again going back to the survey, हमने देखा था I think 77% children को 6 चीज़ें करनी थी आगे जाके, मतलब वो डॉक्टर, मेडिकल, लॉयर, ये अपने वीडियो में भी देख रहे हैं, and many will not go there. तो वो the 6 has to expand to 600 और उनको वो पता हो. So
सो आई एम सो सेइंग कि आप वो 6 में से नहीं हो, आपने वोकेशनल करा है तो आप एक फेलियर हो. आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज. मतलब अभी भी स्कूल्स में व्हेन वी गो, आई थिंक सम स्कूल्स एंड सिस्टम्स अच्छे से कर रहे हैं. वोकेशनल स्टूडेंट्स बहुत प्राउडली बताते हैं कि मैं ये बेकिंग के कोर्स में हूँ, आगे जाके 2 साल बाद मैं डिप्लोमा करूँगी बेकिंग में, फिर मैं अपना बेकरी शॉप खोलूँगी. ये नाम ले लिया है, लोगो भी ले लिया है. देयर इज़ अ प्राइड. वर्सेस कहीं पे जाते हैं कि अब हमने साइंस में मार्क्स आए नहीं थे तो हमने ये मतलब कोर्स वोकेशनल का ले लिया. एंड आई थिंक आउटकम्स उतने ही बदलेंगे. जिसमें प्राइडली, जो प्राउडली कह रहा है कि मैं जाके बेकिंग शॉप खोलूँगा, आई थिंक आई एम होपिंग शी विल डू मच बेटर दैन समबडी हु सेइंग कि मैं क्योंकि पढ़ नहीं पाया तो आज मैं कारपेंट्री का कोर्स कर रहा हूँ. तो आई थिंक स्कूल्स आर इम्पोर्टेंट. उसमें डिफरेंट पाथवेज कह लो ना. पंकज विल से पाथवे नहीं होना चाहिए, बुफे होना चाहिए, जो भी है. आई थिंक चॉइसेस होनी चाहिए, एक कॉन्ग्रीगेशन चाहिए, बट लर्निंग बहुत डिफरेंट जगह से आ सकती है फॉर श्योर. Right. Yeah. So I'll actually use parts of the report to highlight this nuance, right? कि vocational 2017 की रिपोर्ट में 5% पे था, 2023 की रिपोर्ट पे भी 5% पे है. It is not something that has gained, right? Digital, on the other hand, has grown significantly, right? And I feel कि हम वही बच्चों को समझने की and maybe युवाओं को समझने की हमारी सोच में बदलाव चाहिए कि हम वोकेशनल करवाना चाहते हैं और बच्चे वोकेशनल एटलीस्ट जिस तरीके से हम करवा रहे हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. और वहीं पे अगर आप YouTube के चैनल बनाने को वोकेशन गिनना शुरू कर दो तो उसमें हजारों सैकड़ों बच्चों को इंटरेस्ट है, right? तो हमारी खुद की परिभाषाएं एंड व्हाट वी थिंक दैट व्हिच इज वेयर द नीड टू change existing top-down hierarchical narrow structures to become a lot broader strength-based student-led agentic structures जो बच्चों को करने बट उनसे फिर अकाउंटेबिलिटी में मांगे कि अच्छा तुमने ये किया, इसमें कितनी सफलता मिली, इसमें सफलता के लिए तुमको और क्या करना चाहिए, तुमको क्या सपोर्ट चाहिए. सो हैविंग हाई बार, आई फील वन ऑफ द अदर पार्ट्स about education, right? And I think again because Manish gave us so much content, we can refer back to it, that bhai, as in our nurses right, are amongst the best globally, right? And from an excellence point of view, it's a great example of skilling that's worked beautifully because the nurse that is preparing in Kerala is preparing for a job in London. कि हाँ वो लंदन जाना चाहती है, वो दुबई जाना चाहती है और वहाँ काम करने के लिए क्या चाहिए होगा, वो 20x सैलरी कैसे कमा पाए, उसके लिए मेहनत कर रही है. उसके लिए वो 3 साल वो जो GNM का कोर्स है, जो वो लड़की कह रही थी कि उसको नाम नहीं पता था, उसकी तैयारी कर रही है. पर वो जो एक्सेलेंस है कि हम ग्लोबली बेस्ट बन सकते हैं. आई विश वी कुड डू दैट विद टीचिंग. I wish we could do that with that, hey, our workforce is globally best, at least a good portion of it, and we are preparing, a large number of people are preparing for it so that they can have the 20x wage premium, or a small number can have the 20x wage premium. उसके कारण automatically aspiration बनती है. तो आज आप, I am sure आपके दिल्ली के अस्पतालों में अधिकतर अच्छी nurses मलयाली हैं. I have experienced this in Jamshedpur, in Rourkela, in like at various other places, because not all of them get to go to London. And yet the way some of the Kerala nurses are able to deal with difficult patients, etc., a lot of other states are not able to teach that. It's not just the skill, right? It's the culture of how you've built that sense of excellence. So मुझे लगता है कि not necessarily reducing expectations. I feel our youth can do a lot more, and we have to encourage, enable, but also have high expectations from them कि हाँ तुम कर सकते हो. Right? क्यों नहीं कर रहे हो, and why not? So I think in a lot of ways the part about reducing expectations or reducing barriers to me feels counterproductive to eventually India growing and becoming a lot bigger, lot larger, lot more productive and lot happier. हमारे programs में we came up with a terminology. You do some work for all, some for some, and other for few. वो excellence का जो है वो few के लिए हो सकता है, because you really want all as well. Now how do you reach all
introduce people, because people don't know what is possible. If you start something, their choices, role models, all those things start at the all level. And then people pick up and say, I want to be excellent. Because if you don't know what is out there and what is possible. I just want to, last few minutes, want to introduce one thing. Shweta, they have to be brief. I can't, I'll just, okay. मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ. So, there was always this question when computers first came, when people were talking about computers are going to replace teachers. अब तो ये हो गया कि learning without teachers is possible, जहाँ academic का सवाल है. But there are many things, ये vocational जो बात करते हो, actually vocational नहीं, skills training अगर कहो, तो उसके लिए ये है कि there is an उस्ताद model that is being talked about. कि पढ़ाने वाला कोई qualified पढ़ाने वाला हो इसकी ज़रूरत नहीं है. If he is a skilled person, people can sit around him and start. So school का model जो है, उसमें ये बहुत possible है ऐसे मुझे लगता है, because we are insisting that only a certain person can be a teacher. It may not be true. So इससे लेके आप अभी last concluding remarks आप लोग करने के लिए free हो. Within limits. Within limits. Yes. Shukriya. So I think this fact that learning can happen without a teacher was established a really long time ago with the... Let me qualify that. Teacher is a qualified teacher. Understood. हाँ, Understood. okay. The hole in the wall एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, सुगाता मित्रा जी ने किया था, वो बहुत साल पहले हुआ था. एक कंप्यूटर सामने रख दिया, बच्चों को बिना बताए कि इसमें क्या है क्या नहीं है, बच्चों ने खुद सीख लिया था कि क्या है. तो सीखने की क्षमता तो है. You do need somebody to guide and facilitate. I don't think you're going to be able to do away with that requirement in the short run. आजकल बहुत चर्चा होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, चैट जीपीटी ये कर देगा, वो कर देगा, करेगा, but within certain limits. It's unlikely that it will be something that's going to be replacing the flesh and blood person who's there as a facilitator. What we need to do is to move from that model of what used to be called the sage on the stage to guide on the side. If we can actually do that, then I think there is possibility for success. My last comment is I came across this article in a different context. He was talking about STEM education. In fact, there is, sorry, slight digression. There is an interesting finding in this report on STEM, which is showing that not so many kids are going into science education, which clearly has an implication for the future, because more and more jobs are going to be dependent on your abilities to figure out science and technology. But that aside, so this article that I came across last week, I think, was quoted the Greek poet Archilochus, who believed that thinkers were of two types: hedgehogs and foxes. The hedgehogs were people who saw the world through one single defining idea or skill set, whereas foxes were people who were open to all kinds of experiences, who were willing to engage with the world and to learn from each experience. I think what we need to be moving towards is a system which creates more foxes, not hedgehogs. Thank you. Now, who wants to go last has to be the choice of the person. Huh? Okay. Go last. मैं cannot. अभी पंकज है अभी बीच में. I would say, my view is, कोई human, especially when we are trying to say solution for all, उसमें कोई human intervention चाहिए. किसी के लिए वो sage on stage होगा, किसी के लिए guide होगा. Somebody will need it 5%, somebody will need it 1%, somebody will need it 80%. I think हमें वो option देनी चाहिए. To your point, qualified teacher की शायद ज़रूरत ना हो, but quality teacher या quality उस्ताद की है, उसको हम कैसे define करेंगे, वो भी ज़रूरी है, because so maybe वो degree से define नहीं होगा, किसी और तरह से define होगा, but I do feel teachers or human teachers will continue to be an important role. वहाँ से learning, different people will take some proportion of it, but it will be important to continue to believe that humans are needed to embark there. You're the designated last person.
एजुकेशन से पहले मैं HIV एड्स में काम करता था. 10 साल मैंने काम किया है. एंड आई थिंक वन थिंग व्हिच वाज वेरी क्लियर देयर कि किताब भी है, वेयर देयर इज नो डॉक्टर. So you cannot always have a teacher, you cannot always have a doctor. And I think societies and classes and students progress in absence of this codified way of teaching. Though I'm still a very big believer, I'm still on your side there, Geeta, on that codified approach. But I feel that अगर हमें खुद क्लियर नहीं है कि 10 साल बाद या 15 साल बाद प्रोफेशंस कैसे दिखेंगे, opportunities क्या होंगी, तो taking what Megan is saying is actually very important, because you have to again offer that buffet, build the abilities, build that curiosity, and for that often having somebody who introduces you, who mentors you into that, whether they teach you or not. Because 3 तरह से होते हैं कि आप कोई प्रोसेस समझनी है तो आप खुद समझ सकते हैं, कोई स्किल सीखना है तो करना पड़ेगा, और किसी चीज़ पे रूमिनेट करना है, फिलोसफिकल उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है तो उसके लिए आपको तर्क और डिबेट करना पड़ेगा. तो फाइंडिंग दैट राइट स्पेस फॉर ईच ऑफ दीज एंड दैट राइट sage on the stage, or what was the other one? Guide on the side. Whether that is ChatGPT or a fantastic teacher, I would back for all of them, because आप तब तक पूरी तरह से experience नहीं कर पाएंगे लाइफ को, which I think is the most important thing for a young person. No pressure. So I feel मेरा मानना है कि स्पेशली इन सेकेंडरी एजुकेशन हमें स्कूल की दीवार गिरा देनी चाहिए, right? कि लेट द स्कूल एंड द रियल वर्ल्ड intermingle a lot more, right? कि whether it is the ustad coming into the school or students going to places of apprenticeship, right? और वो learning को हम क्लास में बैठने से confuse ना करें. I feel strongly about it. I think the models of apprenticeship and what you can learn, and again it's not just the skill. I feel the culture building that happens, the mindset building that happens as you engage in work, as you work with mentors who have been in that profession for a while, etc., are not easy to teach in a 40:1 or 60:1 setup, right? वो 1:1 or 1:5 जहाँ आप उस्ताद के साथ काम कर रहे हो, and he is also talking to you about punctuality and about like, hey, आपके काम की quality, or why are you not worried about this error that you have made, right? So those mindsets are very important to build. Having been a technologist for most of my professional career, except for the last 8, I am not as bullish just yet on technology transforming education the way it is. मतलब हमें एजुकेशन में मतलब डब्बे बेच के और प्रोजेक्टर बेच के और कंटेंट बेच के बहुत कुछ बेचा गया है, एंड आई डोंट थिंक दैट एंड वी आर येट देयर फॉर टेक्नोलॉजी टू रिप्लेस टीचर्स और एजुकेशन इटसेल्फ. आवर completion rates on MOOCs are less than 10%, and hence to me technology in education has to solve a motivation problem, right? तो मुझे टेक्नोलॉजी के साथ जो चिंता है वो है कि हमारे मतलब जो भी आप एजुकेशन, वेदर इट इज सेक्स एजुकेशन, वेदर इट इज स्किल एजुकेशन और वर्क एजुकेशन पे जो काम हो रहा है, वहाँ जो क्रिएटर्स हैं दे आर नॉट 1/20th as good as the entertainment creators, right? So for a child to be motivated, for a youth to be motivated to spend time watching a movie, to spend time watching porn, like the likelihood of that happening is far, far higher. The money flowing in that space is far, far higher. And I feel like till we can solve the motivation challenges of high quality content, high quality technology, creating immersive experiences that people crave for, that are gamified, etc., जब तक वो नहीं बनता है, you are really competing with Instagram, right? And unless you name one app which is more addictive, which is educational but more addictive than Instagram, and I feel nothing comes close. So that's the challenge. It's not that technology cannot do it, it can, पर अभी
अभी के जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, दैट प्रिवेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ दिस क्रिएशन. सो हेंस आई एम नॉट एज बुलिश कि ये अगले 5 साल में हो जाएगा. ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हु नोस. That's a topic for a completely different and new panel discussion. But thank you very much for being here. आप लोग सब लोग आए और इनकी बातें सुनी. मेरे बीच में कुछ इंचार्ज लफ्ज़ थे, उनको भी सुन लिया. थैंक यू वेरी मच. हेलो. या गो अहेड. तो मेरे सवाल ये है कि हमने बहुत बात की कि स्कूल में ये बदलना चाहिए, स्टूडेंट्स को ये बदलना चाहिए और बहुत कुछ बदलना चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए. मेरा सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं टू एक्सेप्ट द स्कूल ऑफ लाइफ के जो बच्चे हैं, भले वो उस्ताद से पढ़ के आए हों या कहीं से पढ़ के आए हों, क्या हम तैयार हैं टू एक्सेप्ट देम इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट? Aren't we are all guilty to kind of look for these certifications and degrees and so on and so forth? Who wants to take that? It's not about the degrees. Degree is simply a signal. It's about the skill. बच्चे का अगर बेसिक स्किल नहीं है तो कोई भी एम्प्लॉयर उसको एक्सेप्ट करने में उसको तकलीफ होगी. CII की एक स्टडी है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है भारत में जितने निकलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, आधे से ज़्यादा उनमें से अनएम्प्लॉयबल है. और जो एम्प्लॉय किए जाते हैं उनको कंपनी को कम से कम 6 से 8 महीना लगता है ट्रेन करने में, टू ब्रिंग देम अप टू द लेवल वेयर दे आर एबल टू डू द जॉब फॉर विच दे हैव बीन हायर्ड. So it's not, the certificate itself is not, doesn't have any meaning. Certificate simply is a signal कि हाँ इस बच्चे ने ये complete किया है. Certificate होने के बावजूद वो अक्सर skill उसके पास में नहीं मिलता है. So issue is of the skill, not of the certificate. तो 2009 में मैं फ्लिपकार्ट की इंजीनियरिंग टीम का प्रेसिडेंट था और हम लोग मतलब 5 लोगों की टीम थी. मैं टीम बढ़ाने की कोशिश कर रहा था. तो हम लोगों ने कुछ सवाल, कुछ कोडिंग क्वेश्चंस ऑनलाइन डाल दिए थे कि अगर इनको आप सॉल्व कर सकते हो तो इंटरव्यू के लिए कहाँ आना है वो उस उत्तर में है. तो अगर आप ये सवाल कर सकते हो और ये काबिलियत है, तो इफ़ देयर आर ऑटोमेटेड वेज ऑफ असेसिंग एंड बेटर वेज ऑफ सिग्नलिंग आपकी काबिलियत, आई थिंक द वैल्यू ऑफ दीज सर्टिफिकेट्स विल रिड्यूस अ लॉट. कोडिंग में और टेक्नोलॉजी में ये थोड़ा आसान है, इसलिए गूगल ने और भी कई संस्थाओं ने ये कर दिया है कि आपकी कोडिंग की क्षमता के बेसिस पे आप इंटरव्यू पा सकते हैं, आपको डिग्री नहीं चाहिए. लेकिन और कई एरियाज में ये बहुत कठिन है. इसीलिए वो कि अच्छा एग्जाम के लिए तो कम से कम इसने मेहनत की है, तो शायद वो मेहनत वो काम के लिए भी कर लेगा, इसलिए उस सिग्नल को यूज किया जाता है. बाकी उस ज़्यादा मायने नहीं है. My question is very simple and straight, sir. So we have been talking about acquisition of knowledge, certifications and skills. Especially in Andhra Pradesh, our students give a lot of importance to get a seat in either in engineering college or in a medical college. Nobody is interested in humanities. So what is your suggestion that I want from you, sir, your side? Is that true? Nobody is interested in humanities? Very few people are interested in humanities, sir. Especially I am talking about Andhra Pradesh, sir. This is In all states. I am talking. This is an ongoing problem that I think people are aware of. In fact, that article that I quoted was in reference to the fact that not enough students are going towards STEM. What we should be encouraging students to do is to go towards STEAM, which is science, technology, arts, engineering and mathematics. But we are not the only country to deal with this. This is a situation that has been dealt with by other countries as well. The US has had this problem, Australia has had this problem, the UK has had this problem where so education moves in cycles. And we're going through currently a cycle where students are opting towards STEM subjects because they are perceived to be those subjects against which the wage premium is higher. You're getting more money if you are a scientist or a technologist or an engineering person. Arts and humanities are seen as students where people do not make so much money. But the fact is that liberal arts education is also important for students to achieve a more rounded global world view. And more and more colleges are encouraging even engineering students to do philosophy, economics, history along with engineering courses. So I think this is something that we are dealing with as a society. Thank you, sir. Come quickly
quickly onto that. I think there are two very, very interesting things that एक ये कि आपका so you've signaled as a society that there is a premium on STEM. So while whole of the world is talking about sort of the absence of science capital, you've signaled it already. Now, without actually having the means, which is great school, great education, which is accessible and has quality, I am still aspiring to study science because I know कि पैसे तो वहाँ हैं. So I think that signaling needs to be changed, and I think you did allude to that, Mekin. I think second चीज है कि 12वीं फेल के बारे में आपने बात की, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरे पास कोई क्रॉसओवर स्टोरी नहीं है. मैं पिछले 40 साल से 30 साल से यही कर रहा हूँ. So I do wonder कि कब बनेगी एक 12th फेल जिसमें कोई लड़का होगा जो सोशल वर्क या एजुकेशन पढ़ने के लिए इतनी जद्दोजहद करेगा as opposed to becoming a civil servant. And I think those are also ideals that we create because it's about power. It's about aspiring for that stature. I think that's about it, right? Thank you.